Good evening, friends. Keeping in view the perspectives regarding Indus Water Treaty suspension, we thought why not have a change from the topics which we always take on the platform of Beyond Law CLC. So one of the speaker has come on the platform and shared a knowledge on different perspectives. And before going to the platform, we were discussing with Mr. Rahul Bhandari also to the effect that Mr. Sidhu has a knowledge on different spectrums of law and beyond that, just like a topic, but rather it is converse. He speaks more on the other perspectives and somewhat on law, like our topic. And again, we have Mr. Rahul Bhandari, an IAS, a principal secretary from State of Punjab, and Mr. Sidhu is a former special secretary from State of Punjab. And we have seen that our dots connect to make the lines. I just read both of their articles on different social medias. I thought, why not speak on a topic of Indus Water Treaty, suspension, water sovereignty and strategy. It is more like a freewheeling session between Mr. Sidhu and Mr. Bhandari, and we will take questions at the end. And keeping in view the sensitivity, the issues would be more on the perspectives to understand it, and it will be somewhat a topic mixed with more of a English, Hindi, and Punjabi medium, just to put the audience at a caveat on that regard. Over to Mr. Sidhu and Mr. Bhandari, and we are obliged that you have accepted our invite. Good evening, friends, and good evening, Mr. Chatrat, and particularly beholden to our illustrious colleague, Mr. Rahul Bhandari, for having joined. Now, friends, we are talking in terms of Indus Waters Treaty, which obviously is a news after the Pahalgam massacre and how India has put that into suspension. Many people may have heard the Indus Waters Treaty very, very briefly, and very few people would have delved deep into the waters of Indus and its 5 tributaries, which constitute Punjab in the broadest sense, Satluj, Beas, Ravi, Chenab, Jhelum, and since the Vedic times called Sapt Sindhu. Now, before we understand and go into, obviously, the 2 major aspects, like in a movie, let's go to the climax first and say that these are the things we will try to answer at the end before we start the story. Otherwise, sometimes people can lose the plot. Firstly, people would say, okay, you've suspended it. What is going to be the impact on Pakistan? And how soon that impact would be there? Is there a tap? Is there a sluice gate that you can, turn on and, choke Pakistan and Sindh and all their canal colonies downstream of water at a stroke of a pen or at the downing of a canal gate? That's one. The other is, of course, a hyper-legal perspective that they will go into international arbitration. What will happen if you get an award against us and so on and so forth? And that is the type of thinking which has actually clouded the Indian bureaucracy and technical bureaucracy and even the political executive, that what will happen if we try to tweak with this international treaty, India has an image to maintain and so on and so forth. So now that India has suspended, and it is not abrogation in that sense, they may follow that, but what it means and what is Indus Waters Treaty, what is the deal that we got out of it, why was it signed, and did we get a small portion of what we were entitled if we want to do some post-mortem? And even if we got a small slice, were we able to use that small slice, or was even that squandered away either in delays or in interstate wranglings and so on? Because water is an emotive subject, and Indus Water Treaty has now come into focus at the intersection of not only international diplomacy, terrorism, geopolitics, international law. It will also have interstate ramifications. Of course, there will be political parties trying to, point fingers. Who signed this treaty in 1960? Why did you not see it at that point? Why was the interest of the state of Punjab not guarded? And then, of course, there's an entirely different stream of, litigation or discussion you can get into the water rights of Punjab, which we'll try to avoid, because right now we want to have a national perspective, India as a single country, inclusive of Jammu, Kashmir, Ladakh, and all the states that comprise India in the Indus Basin in the wider sense, as to how we can now leverage these developments from here on
if there have been mistakes in the past, we have overlooked some things in the past, or to learn from those mistakes rather than point fingers. But a bit of a historical perspective is always important. I mean, sometimes when we talk in terms of Bhakhra Dam and we say Pandit Nehru said that these are the temples of modern India, we think that this was the beginning of development and this was the beginning of irrigation. Friends, Indus Valley, along with other Nile Valley, Mesopotamia, and so on, were the few valleys in which urban civilization and organized agriculture came 2,500 years before Christ. So we are talking about a history of irrigation and irrigation derived from rivers, which were the lifeline. Even the Ganga Jamuna basin, which arguably is more fertile and has equal quantity of water flowing from the Himalayas and the glaciers, was not able to develop that type of civilization till many hundred years down the line. So fast forwarding it to the Mughal era, there were canals and all that beautiful gardens of Lahore that you see were in one way or the other derived from these rivers, whether from Chenab, whether from Ravi, and so on and so forth. But I will fast forward to the British eras and present a picture which many of you didn't realize, and I also didn't till I either worked in the department briefly for about 10, 11 months before I proceeded on a deputation to Government of India. That was in the year 2012. But irrigation and canal irrigation has been on the British agenda ever since the annexation of Punjab. So, and they were doing no charity to the Punjabi farmers. At that particular time, till the annexation of Punjab and the fall of the empire of Maharaja Ranjit Singh, sometimes let's say 1845, 1847. So Punjab was annexed. What was the major source of revenue for the then East India Company? Was the land revenue. And how do you get more land revenue? By making available facilities in terms of irrigation, because land revenue was tied up to your gross produce, 1/2, 1/3, 1/4. And that's, of course, an entire legacy of the Punjab Land Revenue Act 1887, which we still follow. But suffice it to say that English people were doing no charity and they were developing canals to irrigate what was essentially a fertile bit of land. And they were then allotting what we call marabbas, rectangles, 25 acres each to the people in Lyalpur, Sialkot, Chung, and down Montgomery, Sahiwal, what have you. So, and those were the irrigation works which they were doing. One thing which I would like to add, which normally we don't understand, is that there is a lot of difference between a barrage and a dam. A barrage is essentially to divert the water, whereas a dam is meant to store the water. And dams are generally multi-purpose. You store the dam, hydroelectricity, flood control, tourism, fishery, what have you. So just to give you a flavor, if you're driving from Pathankot to Jammu, you cross the river Ravi and you got Madhopur at works. There used to be a small little restaurant run by Punjab Tourism, and you have the Madhopur barrage. So of course, it has been redone. This was the first one which the Britishers actually built from 1875 to 1879. And all your UBDC, which is even a villager of Gurdaspur, Amritsar, and of course now including Taran Taran, Pathankot, would understand the upper Bari Doab Canal, which was irrigating this and water going right up to Lahore district and so on. So that is the Madhopur headworks. And then you have further headworks at Roped. I mean, we are crossing these headworks on River Satluj, going from this side to Roped district. And we think it is something which has got to do with the Bias Bhakhra Management Board. It's a different thing, the litigation going on, qua that, and they want to take control of that. It's still being controlled by the Punjab Irrigation Department. It is a British era construction of 1882, and the entire Sarhand Canal, which is a huge canal, said to have been built by prisoners who were with the Britishers. And this then goes up into various branches. The erstwhile Patiala princely state up to Abor and so on, various branches. That is the Satluj waters being tapped by the barrage at Satluj. Then Husainiwala came in 1920.
Partly it was meant to irrigate parts in Punjab and parts of Guru Har Sahib, Firozpur district, and so on and so forth. And it is not as if my focus is on the Indian side. These are all pre-partition works. You had a big Sukkar barrage, 1932, which was on Indus and which actually opened up the entire southern Punjab in Pakistan and Sindh to, cultivation of cotton and so on and so forth. And of course, the Harike barrage, as we understand, which now has been created, is a barrage immediately after the confluence of Beas and Satluj, and it diverts a lot of water to Rajasthan, which is, a story which is, intertwined with this. So अब सवाल ये होता है कि इस तरह का सिस्टम चल रहा था और सडनली 15 अगस्त 1947 को देश का बंटवारा हुआ, देश आजाद हुआ। जो एक मुल्क थे, एक कॉन्टिन्यूस रिवर सिस्टम था, वो सारा का सारा एक लाइन ड्रॉ होगी ऊपर। वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट जम्मू कश्मीर, द एनेक्सेशन, द ट्राइबल इन्वेजन, वो सारी बात करते हुए आर्टिकल 370 आया और जम्मू कश्मीर का जो किंगडम है वो अपने आप में उस रियासत का हिस्सा बना। एंड नो व्हाट हैपेंस देयर आफ्टर। अब जब दो मुल्क बन गए तो भारत ने कहा कि भाई हमारा पानी उधर नहीं जाएगा, वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ दिस वाटर टू गो, स्पेशली एट सैनीवाला हेडवर्क्स, especially the upper Bari Doab Canal, which was the lifeline of Lahore district. Because you have the power, you're the upper Apirin state, आपने गेट डाउन कर दिया, उधर पानी नहीं गया, and you can stop it. So this was then the beginning of negotiations. आप ये देखिए कि when the negotiations started, अब जो हमारा रवैया पाकिस्तान के साथ है या हमारा एटीट्यूड पाकिस्तान के साथ है, उस वक्त in spite of the massive bloodsheds associated with the partition, and the people of Punjab have borne it more than anyone else, going from here to there or there to here, irrespective of the religion. Muslims were slaughtered here, Hindus and Sikhs lost their lives. लेकिन उसमें उसके बाद एक गुडविल का एक मरहला आया जिसमें वर्ल्ड बैंक केम। वर्ल्ड बैंक, एज इट इज नाउ कॉल्ड, वाज द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जहां उन्होंने यूरोप विच वाज बम्बार्डेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, तो वो सारी की सारी बात उन्होंने की कि आप लेट अस build up an infrastructure. There's a lot more that the two countries can extract from the Indus and its rivers. There's hydroelectric potential है, यहाँ सतलुज पे भाखड़ा डैम बन सकता है, पोंग डैम बन सकता है, फ्लां गॉर्ज है रावी पे, वहाँ आप you can extract electricity and so on. So these negotiations was started under the arbitration कह लो, mediation कह लो of the World Bank, I'll use the word for want of that bigger phrase. तो करते कराते ये 5-6 साल लगे। उसमें you have to not only tackle with the availability of water, the riparian states वो कहाँ से जाता है, and of course the forces of nature in terms of the forces of gravity भी आपको देखना पड़ता है कि अगर इंडस का रिवर ऊपर से जा रहा है, वहाँ देयर आर डीप वैलीज एंड गॉर्जेस, आप वहाँ इरिगेशन कहाँ करोगे? ऑब्वियसली यू कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली सतलुज या ब्यास वो हिंदुस्तान के हिस्से में खत्म हो जाते हैं तो वो पाकिस्तान क्या लेगा? पाकिस्तान विल गेट ओनली अ रेजिड्यू ऑफ इट। The main point of contention at that particular time was River Ravi. Let us be very clear about it, because Satluj Beas, it was said that the India or the Indian side would be having full rights. It was almost taken as granted because there was no other way it could happen that India would have full rights. Full rights means consumptive जो यूज है वो भी इरिगेशन के लिए, वो जो पानी निकल गया तो निकल के पंजाब के खेतों में चला गया, जज्ब हो गया, अंडरग्राउंड चला गया। सो सतलुज ब्यास की कोई दिक्कत नहीं थी। सवाल था रावी का। रावी बेसिकली फ्लोज in Jammu and Kashmir and Punjab, then goes into Pakistan, meanders, and Lahore as a city is on the banks of River Ravi. And Ravi के साथ especially कई उनकी tributaries हैं, जलाली, उंज, बसंतर नाला, Chakki, and so on. I may be wrong here and there, which sometimes have more discharge than the main river itself. So उस वक्त जब ये लगा इस मीडिएशन में इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के सामने कि रावी का पानी अगर ये सालम या जुज़वी तौर पे पाकिस्तान के हिस्से आ गया तो हिंदुस्तान को
और खास तौर पे पंजाब को, इट वाज यूनाइटेड पंजाब, हरियाणा वाज नोवेयर इन दी साइड। पंजाब दिल्ली के साउथ 120 किलोमीटर तक जाता था, पेप्सू था वो भी मर्ज हो गया। तो पंजाब को बड़ा नुकसान होगा अगर इफ वी आर नॉट एबल टू इन एनी केस प्रेजेंट टू द वर्ल्ड बैंक एंड द एक्सपर्ट्स एंड द मीडिएटर्स कि ये पानी आप इस्तेमाल करोगे कैसे। सो दैट वाज अ टाइम। आज विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट यू कैन से कि जी ये देखिए वो चीफ मिनिस्टर इकट्ठे हुए तो उन्होंने बैठ के ये इंटरस्टेट एग्रीमेंट कर लिया तो 1955 में, और वो 8 मिलियन एकड़ फीट राजस्थान को दे दिया। एंड उससे आपने जस्टिफाई किया कि जी हमने तो राजस्थान को पानी भेजना है, एंड देयरफॉर वी विल रिक्वायर मोर वाटर एंड सो ऑन सो फोर्थ। Be that as it may, India's stand was that we are in dire need of water, not only in Punjab, even today. This is a statistic which I often quote. About 25 to 27% of modern day Punjab is irrigated through canals. Everything else is a question of digging and drilling water and extracting water from the ground resources. सो ये जो कई बार मुद्दे आते हैं कि सरप्लस वाटर है, हरियाणा को सरप्लस वाटर, इराडी ट्रिब्यूनल, इंटायरली अ डिफरेंट डिस्कशन फॉर अनदर डे। बट पंजाब के आज भी किल्लत थी, 1955 में भी किल्लत थी, बट एट दैट टाइम द ब्रॉडर नेशनल इंटरेस्ट एट पंडित नेहरूज लीडरशिप, द चीफ मिनिस्टर्स, उन्होंने कहा कि जी राजस्थान भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, वहां रेगिस्तान है, ठीक है, गंग कनाल है, गंगानगर में थोड़ा बहुत पानी जाता है, लेकिन हमने तो बीकानेर तक, जोधपुर तक पानी लेके जाना है। और आज भी अगर आप देखो, इफ यू गो टू हरिके बराज, उसके लेफ्ट बैंक से जो राजस्थान फीडर कनाल और सरहंद फीडर कनाल निकलते हैं वो दरिया की शक्ल में है। आई डन इलेक्शन ड्यूटी इन जोधपुर, वहां जाके आपको पता लगता है कि वहां पीने का पानी एक्चुअली इज रावी ब्यास वाटर्स विच इज कमिंग देयर। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये नेगोशिएशंस हुई, चलती रही, एंड अल्टीमेटली एज अ फॉर्म ऑफ सेलिब्रेशन, जिस तरह वो आर्मिटाइज होती है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, उसी तरह 19 सितंबर 1960 को पंडित नेहरू और फील्ड मार्शल अयूब खान, हु वाज द प्रेसिडेंट कह लो, उन्होंने कराची में ये मुहदे पर दस्तखत किए, इंडस वाटर्स ट्रीटी। इट वाज अपलॉडेड एंड लॉट ऑफ फंडिंग ऑफ द वर्ल्ड बैंक। आज आप कहोगे वर्ल्ड बैंक कौन सा ताया लगता है कि वो बीच में आ गया। सो उस वक्त उन्होंने समथिंग लाइक 1.2 बिलियन डॉलर्स का उनका पैकेज था 1960 की प्राइस में, जो आज की डेट में कहते हैं कि जी 12 बिलियन डॉलर्स है, विच इज नो स्मॉल सम ऑफ मनी, बिकॉज इट रिक्वायर्ड फंडिंग टू बिल्ड डैम्स, बराजेस, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, पोंग डैम एटसेट्रा। ये सारा का सारा जो मसला है उसमें था। एंड देर इज अनदर फिगर विच कम्स, आई एम सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, मेरी इंटरनेट रिसर्च ने दिखाया कि हिंदुस्तान ने उस वक्त 125 मीट्रिक टन जो सोना पाकिस्तान को दिया टू कॉम्पनसेट फॉर द वर्क्स एंड न्यू वर्क्स, एंड विच वाज एज एफ आर कॉन्ट्रीब्यूशन, बिकॉज इंडियन रुपी की शायद उतनी वैल्यू नहीं थी, डॉलर्स हमारे पास थे नहीं, तो दैट वाज अ पार्ट ऑफ इट। और अप्रोक्सीमेटली जो हमें मिला वो 33 मिलियन एकड़ फीट एक साल का, और जो पाकिस्तान के हिस्से आया वो 135 मिलियन एकड़ फीट। आज की डेट में ऐसे लगता है कि 80% जो चीज़ है उनको जा रही है, हमारे हिस्से में सिर्फ आ रही है अबाउट 20%। टू कंक्लूड, व्हाट इज द जिस्ट? जिस्ट ये है कि सतलुज और ब्यास का पानी और रावी का पानी सालम हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की मलकियत है। आप सारा उसको पियो, फेंको, हाइड्रोइलेक्ट्रिक करो, राजस्थान में ले जाओ, हरियाणा में ले जाओ, दिल्ली को दे दो, एंटी ग्रेविटी मेजर से हिमाचल को ले जाओ, कुछ भी करो, इंटर बेसिन ट्रांसफर करो, कुछ करो, इट इज इंडियाज दिस थिंग, उसमें पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। एंड एज पर द इंडस वाटर्स ट्रीटी, द वेस्टर्न रिवर्स जिसे कहते हैं, दोज आर द रिवर्स ऑफ इंडस एंड झेलम एंड चनाब, those along with its tributaries are basically of Pakistan। लेकिन what people don't realize, हम भी जब महकमे में मैं थोड़ी देर काम किया कि जी इंडिया का कोई ज्यादा नहीं, वी कैन ओनली जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जिसे कहते हैं कि कंजम्पटिव कंजम्पशन ऑफ द वेस्टर्न रिवर्स नेमली इंडस, झेलम एंड चनाब टू इंडिया वाज नॉट परमिटेड। वो आप
ग्रेविटी से जनरेट कीजिए इलेक्ट्रिसिटी, जो पानी है बाकी का बाकी पाकिस्तान को जाना चाहिए। अगर डाइवर्ट भी कोई हाइडल चैनल से होता है वो वापस उसी दरिया में आना चाहिए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट वी स्टिल हैड समथिंग लाइक 3.6 मिलियन एकड़ फीट, भंडारी साहब ज्यादा डिटेल में बताएंगे, which we had the right of consumptive use। लेकिन ईस्टर्न रिवर में ना सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ दी ट्रीटी गेव अस, जिसे कहते हैं 1.25 मिलियन एकड़ फीट फॉर जनरल यूज। जनरल यूज क्या है? इरिगेशन। ये अलग बात है कि आपका लद्दाख में लिमिटेड है, चनाब वैली में है, झेलम के साथ साथ है, सैफरन फील्ड्स एंड सो ऑन। वो है 1.60 मिलियन एकड़ फीट आप स्टोर कर सकते हो फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पर्पसेस, एंड देन फॉर फ्लड प्रोटेक्शन भी आपके पास यू हैव अ रेजिडुअल ऑफ subject to correction here of 0.75 million acre feet. So सवा प्लस 1.6 प्लस 0.75, आज भी हिंदुस्तान के पास वेस्टर्न रिवर्स का 3.5 मिलियन एकड़ फीट, अगर ये ट्रीटी नहीं भी रद्द हुई, सस्पेंड हुई, निलंबित हुई, हमारे पास हिस्सा है। लेकिन उसमें जो हमने एक्सप्लॉइट किया अभी तक, whatever be the reasons, we are not pointing fingers कि जी हालात खराब थे, वहाँ टेररिज्म था, पंजाब और जम्मू कश्मीर की चलती रही रावी के भी लिए, वो तो हम बात ही नहीं कर रहे। मे बी वी कैन डिवोट 5 मिनट्स लेटर ऑन टुवर्ड्स द एंड। लेकिन आज तक जो हमें जायज तौर पे हमारा हिस्सा है उसका भी एक स्मॉल फ्रैक्शन, वेदर इट इज इरिगेशन, वेदर इट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक, वेदर इट इज फ्लड कंट्रोल, जम्मू कश्मीर में हम नहीं कर सके। टेक्निकल इश्यूज थे, फंडिंग नहीं अवेलेबल थी, सरकारों की मनशानी थी, सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का तालमेल नहीं था, वट एवर बी द रीजन। सो व्हेन वी नाउ लुक एट era of post suspension, when we say that this bounty has fallen to India and we are going to deprive of Pakistan of this valuable resource which someone perhaps wrongly signed in 1960, तो मैं समझता हूं कि उससे साथ साथ ये भी देखना अनिवार्य है कि क्या हमें जो मिला था तो वो भी 1960 से अब 2025 आगे 65 साल में फॉर 6 decades and a half have we been able to utilize this? No, I'll hand over to my illustrious colleague, but with the overall thing is that this was not something which was signed overnight. Careful thought, negotiations, experts, and you have to see the scenario कब हुआ। आपके पास इंडिया एंड पाकिस्तान वर ऑन वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी, आपको खाने के लिए अन्न नहीं था, यू वांटेड टू अशर इन ग्रीन रेवोल्यूशन, तो राजस्थान को भी बचाना था, पंजाब को भी बचाना था, हरियाणा की कोई बात नहीं थी, एंड वी हैड टू कम आउट ऑफ द ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन। उस वक्त ये ट्रीटी हुई, इट सर्व्ड इट पर्पस। पंजाब साइड में सतलुज, ब्यास, रावी टू सर्टेन एक्सटेंट वी वर एबल टू एक्सप्लॉइट। लेकिन जहां जम्मू कश्मीर का जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हिस्सा था, उसमें वी मस्ट बी कंपेल्ड टू एडमिट एज अ नेशन, एज एन इंडिविजुअल, एज अ फॉर्मर सिविल सर्वेंट, दैट समवेयर there was a lack of coordination, lack of political will, lack of that thrust, और मे बी सेइंग कि ये ना हो जाए, वो आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे, हिंदुस्तान की बदनामी हो जाएगी, दिस एंड दैट। अब ये मौका है when the public opinion is on our sides, questions of interstate issues के ये इसमें हरियाणा का हिस्सा होगा कि नहीं होगा, राजस्थान मांगेगा कि नहीं मांगेगा, पिछली ट्रीटी तो नहीं खुल जाएगी, वो चीज़ों को नीचे रखते हुए in the overarching national interest, now time is ripe, firstly to utilize what is rightfully our due, एंड उसके बाद जो सस्पेंशन के बाद हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, ये डिसिल्टिंग नहीं करनी, ये पॉन्डेज नहीं करना, ये वहां इतराज आ रहा है वो एनओसी नहीं दे रहे, वो चीजें खत्म हैं। अब बोल्डली इसे एक रियली नेशनल प्रोजेक्ट विद अ सीनियर पर्सन एंड अ गुड कैबिनेट मिनिस्टर टू पुश इट थ्रू होना चाहिए, तब जाके इसका बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज एज आई रोट इन माई लिटिल आर्टिकल कि चंद महीनों बाद इट मे जस्ट बिकम अ हिस्टोरिकल फुटनोट इन द जियोपॉलिटिक्स of the subcontinent. Thank you. So I'll request, unless Mr. Chatrath has some remarks at this stage, Mr. Rahul Bhandari to take on to get you to the nitty-gritty of the treaty. Good evening, sir. Esteemed panelists and the friends who are there, I can see R.K. Singh Sidhu ji also and many other colleagues. Very, very good evening and Sat Sri Akal.
Sir, as you very rightly summarized everything, I have a little different view, sir. Point is that 1960 probably we were not, uh, we don't have that much of wherewithal. We were, as you very rightly said, we were not even food sufficient, sir. The diplomacy seemed to be, it's again a retrospective postmortem, I can say, was more in favor of Pakistan, sir. The World Bank gave generous funding to Pakistan. India gave 62 million US dollars at that point of time, sir. And plus, we took care of even the interim period of 10 years. Between when the treaty was signed in 1960, for 10 years, we said we will maintain the water which was flowing from Satluj and Beas also, so that Pakistan can come up with their networks in that 10-year period. About the another thing, sir, which I now feel, and again retrospective, is that Indian Prime Minister went to Karachi to sign the treaty. That's a in diplomatic term. It's a very big thing that as a upper riparian state, which has the which has all the rivers start from India only, the post 47 India, and we are going to Pakistan to sign a treaty along with $62 million, along with transition time, that you please come up with your things so that the people of Pakistan are not, they don't suffer. Sir, about the treaty, just very, very briefly, so there are actually 7 rivers, as you very rightly said, sir, Sub-Sindhu. The treaty is silent about Kabul River, sir, which has also gone to Pakistan, but we generally speak of these 6 rivers, 3 going to India, 3 going to Pakistan. Uh, Unfortunately, or as the geography says, sir, the western rivers have much, much higher water flow, water measurements as compared to the eastern rivers. Uh, as per the calculations which have been done by various people, we should have got at least 41-42% based on the population, based on the irrigation, which was the irrigation status at that point of time, and other parameters. But somehow we got only 20% of the total water which was there in the whole Indus Water Basin, minus the Kabul River. That was the, I don't know the reasons, sir, for that. The debates and the discussions really don't say. But yes, one thing about the treaty, they say it was a treaty which was designed by engineers and not by advocates and diplomats. It's a treaty which was the engineers' treaty. Engineers and technicians, they say. Sir, about the as you very rightly said, I will shuttle between the then provisions and how much we have been able to utilize. So first about the rivers which have been allotted to India, these 3 rivers, Ravi, Satluj, and Vyas. Yes, sir, we have been able to now. Sir has already handled that Shahpur Kandi and Ranjit Sagar Dam projects. We are now able to more or less utilize, especially in non-monsoon months. In monsoon months, we really don't have much of necessarily wherewithal to do it, and probably the requirement is also not there in the monsoon, the 4th monsoon month. But in 8 months, yes, we are able to control. Still the calculations say that 2 to 3 MA of water goes to Pakistan from these 3 rivers, which are exclusively for Punjab, now Haryana and Rajasthan. Sir. This water is actually ours, and nobody can stop it. Nobody can raise any finger. Whatever structures we can or we want to make on these 3 rivers. So the actual the problem, Ravi was very rightly said at that point of time, but now the actual problem is these 3 rivers. Out of these 3, sir, I would say the most important for India in case of abrogation of treaty is Chenab and Jhelum, sir, and third is Indus. Indus, we really can't do much, sir, because as we see the geography, it skirts the town of Leh Ladakh and enters Gilgit, and then it enters Pakistan. We really don't have much of structure there. Still, Government of India has, I think, they have come up with 2 or 3 small HEP projects there in on the river Indus. The 2 big rivers which India can really utilize if they want to make Pakistan feel the pinch are Jhelum and Chenab.
And if we further go into the details, sir, as you very rightly said, these are actually, we talk of these two rivers as a big major monoliths. They are not. There are many tributaries and many small things also, like Kishan Ganga is one, which is very, very important. And secondly, we have a Madhumati Nala there in J&K. And third thing which we have is a Wooler Lake, another very, very important, significant thing in the state of J&K. So the problem with India, as you very rightly said, is that we were allowed to save 3.6 MA of water. It's a good number from these western rivers also, but unfortunately, for whatever reasons, we have not been able to do anything on the storage of water from western rivers. Similarly, about the agriculture uses, we were, I think, given around 13 lakh acres of irrigation was possible from these rivers, but we were not able to do so far much, sir. The major pinch, which would say, from these western flowing rivers has been to the state of J&K. The potential of the hydroelectric potential of that area is approximately, the engineers say, around 15 to 16,000 megawatt, whereas we have only come up with HEP projects of more than around 3,600 megawatts so far. So it means that there is much more potential which can be utilized. We cannot make any dams or big storage structures in J&K, but definitely we can plan ROR, that's a runoff river projects. But now the point is, sir, that even if we start doing it, it really takes a lot of time, effort, energy, finances for doing it. So if we broadly divide, sir, the one is about the western flowing rivers. Yes, we can do something. And again, the government of India, as you said, sir, very rightly said, the Home Minister recently had a detailed meeting with all the engineers of Central Water Commission and others, and they are coming up with strategies. But again, as per the public information available, in the three things: short term, immediate, short, medium, and long term. How can we affect? How can we touch the flow of water? So Pakistan, being a lower riparian state, has always played its cards very wisely. I would say, how wisely? Like, they don't want the treaty to be touched. So whatever project was conceived in the state of J&K, they were the first one to oppose it on any context, because they know once a spoke is put in the project, it takes 2, 3, 4 years before it can be amicably resolved. Plus, a lot of time goes, money goes, international experts. Sir, I happen to be part of one of the international arbitration which I had when I was in government of India. It really is a lot of energy, time, and finances are required for clearing the objection which Pakistan used to put up. Because the treaty says that in case of a dispute, the first mechanism is the Permanent Indus Commission, which is headed by one person from Pakistan, one person from India. They meet every year. They submit a report every year by 31st of May, and they alternatively visit India. One meeting is in India, second is in Pakistan. That is one, sir. Then the second is about the data sharing, that we are bound to give a lot of data to Pakistan. As you know, sir, knowledge data is power. So I'm very, very sure, like somebody was asking me after my article, how can we do it? I said we can't cut the hand, but we can definitely give a lot of small cuts immediately. Small cuts. The data is one of the biggest source of the immediate which we can do in case the government or the political masters want to use water as a strategic weapon. So now, as you said, very rightly said, despite our best efforts, we are not able to utilize our own waters. Plus, we are not able to utilize the waters of Western rivers also. And the time after this terrorism and incidents. Now, earlier it was in Uri also. Now, after the latest Pahalgam incident, there is a demand and for abrogation or temporary abeyance of this treaty. सर, ये पहले ही ऐसी ट्रीटी है जिसके अंदर कोई भी टाइम क्लॉज नहीं हैगा. नॉर्मली ट्रीटी का ਹੁੰਦਾ है जी कि 30 साल बाद ऐसे रिव्यू करांगे, 40 बार करांगे, 25 बार करांगे. ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ओपन एंडेड है.
ਸੈਕੰਡਲੀ ਸਰ ਇਹਦੇ ਚ ਅਬੇਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਅਬੇਂਸ ਕਰਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਬਟ I feel if we go clause by clause, there is nothing called abeyance of the treaty. The third thing is, sir, about India will have a lot of diplomatic fallout of this. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ sir because ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ sir ਉਹ international ਜਿਹੜੇ agreements ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਚ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ sir ਜਿਹੜਾ upper riparian ਹੈ sir ਉਹੀ ਇਸ ਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ lower riparian की कोई ज्यादा असर है नहीं सर we are also suffering we are going to suffer in northeast and China is not going to listen to us and they will come up with a dam on Brahmaputra whatever we raise whatever platform we use UN US nothing is going to materialize they will come up with dam in case they can technically and financially so mere ख्याल में sir मैं I have welcomed this step and since last 10 years I've been saying that this thing is very much required for at least for the state of Punjab, Haryana, and Rajasthan, sir. And the only thing is, sir, when we comment, Padra very rightly mentioned about say tunnel, which is the need of the hour, Chagbu or something. What is the name? One of the speakers has said. So my take is yes, sir. We should start working immediately, work hard, and as that famous UN Secretary General Buttar Ghali had said that the next war is going to be on water. And keeping in view the bad water situation in Punjab, water table going down, more than 80% groundwater blocks already overstressed and already overexploited. So we are desperately in need of surface water. And probably, sir, we have to think of that the second Ravi Vyas link also, which is there, which was declared by Government of India as a national project with more than 90%, even I think 100% funding. But somehow because of the dispute between the states, it was not able to move forward. So with these words, sir, I would request you or Vikas ji to further continue. So I think both of you have shown the perspective and what we had seen through that articles of yours, it is actually culled out. Now, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ what rights can be invoked ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ and what benefits eventually we can capitalize on this thing by suspension in the purpose of agriculture perspectives, etc. I'll ask Mr. Sidhu to share his knowledge. First of all, I must compliment Mr. Rahul Bhandari for giving a very, very expansive as well as an in-depth perspective, and especially his hands-on experience being a part of the delegation of the Permanent Commission and seeing how the things have gone on. The fact of the matter is that water disputes, everyone is a water expert. Someone is talking in terms of riparian law. Someone will say, okay, Danube and Rhine rivers are going across the entire Europe, and Europe has had, 2 world wars, and, still things are going. They have navigation and so on, and Napoleonic era wars have happened. So India and Pakistan are not the only 2 hostile neighbors in the world. China is there, of course. So that is there. The water issues have been at the intersection of obviously bureaucrats, technical people, the Central Waters Commission, and then you got the lawyers. Whenever the litigation comes in, the water cells of various cells matters in Supreme Court and going so on and so forth. Since we have a bit of time, one can, touch it just to see that within the overall superset of the Indus Waters Treaty, what is the subset that has been interplaying within the rivers that were already allocated to us. So, and of course, the political executive, how much of political will they have domestically intercede the states, and of course, in the international level. I mean, you have a person like Donald Trump who says, what is this treaty, North American Free Trade Agreement, I'm walking out of it. What is this Paris Treaty of this thing, I'm walking out of it. Of course, once you have a military and financial clout, you can afford to take those type of things. But India has taken the first very decisive step, and firstly, that has to be appreciated. Now, once having done that, if subsequent follow-up steps, even if they're small ones in the right direction and with the right speed,
then it will show that it was much more than a mere rhetoric. Now, in this particular case, people have, of course, engineering solutions are there. Colonel Jasgill says, there has to be a tunnel from there and, transfer the waters from, River Chenab to the Ravi Basin, which earlier was not allowed. It is technically feasible now. I mean, if we are going to ignore the, and, pretend as if the treaty has ceased to exist, Pakistan jo jata kare, fir apna, after all, World Trade Organization bhi hai, someone is putting tariffs and so on selectively. तो वो dispute settlement mechanism होता रहेगा. You have the International Court of Justice, which is perhaps, issuing international arrest warrants against the Israeli Prime Minister, and no one is bothered. So I think time for, getting into those things is now over. वो बाद में देखेंगे when we sit on the table after the biggest wars in the world, World War II, people sit on the table. But India, as Rahul Bhandari has rightly said, as an upper riparian state, we should, and also economically better off and diplomatically also better placed off, we should now be able to extract our pound of flesh either in renegotiating or extracting out of what we regard as a suspended treaty. So, my perspective is that at least in the projects which are close to the last mile, उनको हमें सबसे पहले करना चाहिए, which फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे जहन में आता है वो शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट है. शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट क्या है कि रावी रिवर्स का एक एग्रीमेंट हुआ, इंटरस्टेट एग्रीमेंट बिटवीन पंजाब एंड जम्मू कश्मीर. इफ आई करेक्टली रिकॉल 1978-79 में प्रकाश सिंह बादल साहब पहली दफा चीफ मिनिस्टर बने और बड़े शेख अब्दुल्ला साहब उस वक्त वजीर आला जम्मू कश्मीर स्टेट के थे. उनका वो था कि जी हाँ, एक थेन डैम बनेगा और डाउन स्ट्रीम बनेगा आपका शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट. अब देखिए वो तो बन गया, 2000 में जाके इनॉग्रेट हुआ. आई रिमेम्बर प्राइम मिनिस्टर भी आए, बादल साहब देन वाज अगेन दी चीफ मिनिस्टर फॉर परहैप्स द थर्ड टाइम. एंड शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट विच वाज अ पार्ट एंड पार्सल, भाखड़ा डैम के नीचे नंगल डैम है, बैलेंसिंग रेजर्वोयर चाहिए, तो वो करते इट वाज डिक्लेयर्ड अ नेशनल प्रोजेक्ट. 90% ऑफ द इरिगेशन कंपोनेंट इज टू कम फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाकी पंजाब सरकार का है, उसमें पावर भी जनरेट होनी है. एंड एग्रीमेंट इज इन प्लेस, उसमें किसी और स्टेट का लेना देना नहीं, फंडिंग सारी पंजाब गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है. यू हैव पीपल लाइक हरियाणा पुटिंग इन इंटरिम एप्लीकेशंस कि वो एसेट बना नहीं, अभी एक बीज बोया नहीं, उसके वो आम की गुठली आपने बोई है तो उसके जो आम लगेंगे उस पर जो बूर आएगा उसमें हिस्सा होने चाहिए. तो यू आर गोइंग टू दी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. एंड ऑफ कोर्स इट वाज अ बोल्ड डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट एट दैट स्टेज कि जी हम इंटरनेशनल टेंडरिंग की है तो हमने अलॉट कर दिया. तो आई वेंट ऑफ टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, इट्स नो बिग अचीवमेंट ऑन पर्सनल पार्ट. मैं आया तो जाके 2017 में ड्यूरिंग इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट वो मुझे एडिशनल चार्ज दे दिया जी को, बिकॉज द चीफ सेक्रेटरी एज पर द इलेक्शन कमीशन कुड नॉट होल्ड एडिशनल चार्ज ऑफ एनीथिंग एल्स. तो वहाँ मैंने देखा जी काम रुका हुआ है. क्यों? कहते जी डिप्टी कमिश्नर साहब आदर कथुआ आए तो उन्हें पता नहीं क्या कोई दिक्कत थी, तो डैम तो पंजाब की टेरिटरी में है लेकिन जो रिजर्वायर जो होना है लैंड एक्वायर्ड है, तो उसमें वो मौके पे काम रोके. तो हमने क्या किया जी, हमने काम रोक दिया. सो वी अप्रोच, लकीली वी हैड अ वेरी गुड ऑफिसर ऑफ द इन द यूनियन वाटर रिसोर्सेज सेक्रेटरी, उनसे बात की, सारा खुलवाया. अगेन देयर वाज फ्रिवलस ऑब्जेक्शंस एट द लेवल ऑफ ऑफिसर्स. बट अल्टीमेटली जब हम उनके साथ बैठे, वी टॉक टू आवर बैचमेट who was also the chief secretary in Jammu of Kashmir. तो कई इंटरनल पॉलिटिक्स उनकी पता लगी. ये पता लगी कि साहब, एंड आई कैन से ऑन दिस ओपन फोरम कि वो कहते हैं जी महबूबा मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर हैं, बीजेपी तो उनकी पार्टनर है, तो लेकिन वो उसका जो सारा सालम बेनिफिट हो रहा है तो वो तो जम्मू एरिया को हो रहा है जिसमें इरिगेशन होनी है. सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड. वो तो बड़े बड़े मसले कहेंगे कि 10 साल पहले ये प्रोजेक्ट बनना था, अगर ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता तो इतनी फसल आनी थी, इतनी इनकम आनी थी, इतनी बिजली आनी थी, इसलिए उसको कंपाउंड इंटरेस्ट ला के इतने 1000 करोड़ पंजाब के खिलाफ हम करेंगे, वरना हम होने नहीं देंगे.
Then we went back to that agreement and said कि ये सारे मसले जो हैं 1 लाख करोड़ भी लेना आप लिखिए, लेकिन put a arbitrator, that is what, why are you stopping the work? This is a national wastage, it is a criminal national wastage कि वो पानी पाकिस्तान को जा रहा है, चाहे हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करें ना करें. अब वो शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट, आई अंडरस्टैंड ओनली फ्रॉम द न्यूज़पेपर, आज कल में मतलब ये मुकम्मल हो जाना है. एंड इफ बिफोर दिस monsoon season we are able to at least put that in operation and totally partial generation करना शुरू कर दो, it will be a big signal कि अगर प्रधानमंत्री साहब ने इस तरह की कैबिनेट कमेटी ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने ये फैसला लिया है, तो पंजाब एंड जम्मू कश्मीर मुश्तरका तौर पे उन्होंने ये पहला कदम शो कर दिया कि ये जो पाकिस्तान को पानी जा रहा था हमारे रावी रिवर का, कम से कम उसको हमने रोक लिया है. So this would be, and similarly कि जो डीसिल्टिंग सलाल प्रोजेक्ट की है, डीसिल्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर एक डैम बना है वो, इट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन जम्मू कश्मीर, तो उसमें सिल्टिंग हो रही है, सिल्टिंग ही पाकिस्तान करने नहीं दे रहा, तो आप कीजिए अब, क्योंकि उसमें जितनी सिल्टिंग डीसिल्टिंग होगी उतना स्टोरेज ज़्यादा होगा, उतना उसमें द हेड विच इज क्रिएटेड फॉर जनरेशन ऑफ टर्बो, दैट विल बी मोर. So small little projects have to be taken and expeditiously and also implemented. अब इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊं, बिकॉज इट इज रिलेटेड, और वो बार बार आती रही है, कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने took a very bold step at that particular time in the year 2004, the पंजाब टर्मिनेशन ऑफ वाटर एग्रीमेंट एक्ट. उन्होंने कहा कि मैंने सारे ये जो हैं वो रद्द कर दिए. पंजाब विधानसभा ने पास किया, गवर्नर साहब ने साइन किए, इट वॉज नोटिफाइड इन द गजट. इट टोक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इफ अनलेस आई एम मिस्टेकन, वो 2016 में जाके नवंबर में कंसल्टेटिव जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी ये दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, पंजाब के हकूक की हिफाजत हुई. अभी भी दैट इज ओनली एन एडवाइस विच इज एडवाइजरी नेचर, उसको एक्ट अपॉन करना रहता है. बट वाई एम मेंशनिंग इज दिस, उन्होंने प्रीफेस में लिखा था कि ऑल टर्मिनेशन ये एग्रीमेंट हो गई, तो जम्मू कश्मीर वाले जो पहले ही कोई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे कि थेन डैम से भी पानी मिले या बिजली लेनी है या नहीं लेनी, या और शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट बने, वो कहते हैं जी आपका तो ये कानून है कि ये कह रहे हैं कि टर्मिनेशन एग्रीमेंट होगी, तो बादल साहब और बड़े शेख अब्दुल्ला साहब की एग्रीमेंट तो आपने रद्द कर दी, अब उसके तहत क्या बना रहे हो, हम नहीं काम करने देंगे. सो आई रिमेंबर वी लड़के हमारे वाटर एक्सपर्ट से हमने एफिडेविट दिया कि जी दिस डज नॉट अप्लाई टू राइपेरियन स्टेट, एंड कोर्ट में होल्ड अकॉर्डिंगली जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है, ये जो हमने रद्द की हैं तो बाकियों के लिए हैं. बाकियों के लिए वो एक सेविंग क्लॉज है सेक्शन 4 और सेक्शन 5 का, कि एग्जिस्टिंग यूजेज टू राजस्थान हम प्रोटेक्ट करेंगे. तो भाई अगर जम्मू कश्मीर के साथ एग्रीमेंट आप रद्द नहीं कर रहे, राजस्थान को जो 8 मिलियन एकड़ फीट जा रहा है वो रद्द नहीं कर रहे, तो देन उस टर्मिनेशन ऑफ वाटर एग्रीमेंट एक्ट के लिए जो इराडी ट्रिब्यूनल ने एसवाईएल के जरिए पानी 3 पॉइंट समथिंग एमएफ जाना है, वो कैसे रोकेंगे? इंटरेस्टिंगली जितना हमें बच रहा है और जो हमारा हिस्सा है ये वेस्टर्न रिवर से, इन थियरी एज मैथमेटिकली वो लेके आना कैसे पहुंचता है, दैट इज एन इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजिकल एक्सरसाइज, मनी एंड सो ऑन, is approximately the same which our poor cousin or richer cousin, I would now say, Haryana has been demanding. So अब ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स से लेके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मिशन मोड में करने की जरूरत है. एंड इट इज नॉट, लकीली द थिंग्स व्हिच हैव चेंज्ड इज बोल्ड नेशनल लीडरशिप, clarity of thought, people sitting in the Jal Shakti ministry know that they have the full support. वरना तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में गया तो जॉइंट सेक्रेटरी से आगे उनकी फाइल ही नहीं सी मूव करती कि नेक्स्ट बजट में आना. एंड देन ऑफ कोर्स द यूनियन टेरिटरी स्टेटस है अब, नो डाउट वी हैव एन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, वेरी गुड, ही वुड आल्सो बी पुशिंग, एंड उनको बेनिफिट है, ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द इंटायर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, नॉट ओनली द कश्मीर पार्ट ऑफ इट. एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, वहां भी जिसे खुश्क एरिया कहते हैं, 50% वहां irrigation होने के, it is in a rain shadow area. So now we have to get beyond, the ball is in our court as a nation.
and all stakeholders, they should be a part of the solution. हाँ, कि ये नहीं हुआ, वैसे करना था, कोई इकोलॉजी वाला आ गया, कोई सतलुज डॉल्फिन वाले आ गए, तो कोई वहाँ एक पाइन ट्री कट रहा है, वहाँ की चीजें पहुंच गई, वहाँ गुज्जर ग्रेज करते थे। अगर उस तरह की चीजों में हम एक नेशन के तौर पे, एक मुल्क के तौर पे पढ़ेंगे, तो फिर वो इट विल बी बिजनेस एज यूजुअल, जैसे हमने देखा है। तो 10 साल बाद, 15 साल बाद वही चीज होगी कि जी अब ये टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, अब इसके करने की जरूरत नहीं है। अब आप करोगे क्या, ग्लेशियर में तो बर्फ नहीं पड़ती है जी। जो इतने एमएएफ इराडी ट्रिब्यूनल ने कहा था 17-18 एमएएफ, वो रही 12 गया है। ये डेजर्टिफिकेशन हो गई है, ये पंजाब का वाटर टेबल डाउन चला गया है। देन इट विल बी अ सॉब स्टोरी with a sad ending. On the other hand, if we place these projects in a descending order in terms of time, कि ये 6 महीने में पूरे होने वाला है, जैसे शाहपुर कंडी डैम का मैंने एग्जांपल दिया, और छोटे मोटे काम हैं। कर्नल गिल was raising his hand, he seems to have studied it in detail। तो उनको प्रायोरिटाइज करके कि ये 6 महीने वाली बात है, ये 2 साल वाला प्रोजेक्ट है, ये 10 साल वाला प्रोजेक्ट। आई मीन एज मौसी तंग सेड कि अगर 10,000 मील भी चलना है तो पहला कदम तो आज आपको उठाना पड़ेगा ना। 10 साल के एक मुल्क की हिस्ट्री में क्या होते हैं? 65 years तो we have seen happening, between the signing of the treaty and now. So this is an opportunity which is fraught with challenges. It is not a small task. It has to remain on the national agenda. ये नहीं है कि आज है, कल है, परसों है, बिहार इलेक्शन खत्म होगी, अब नहीं है, परसों फिर पंजाब की आ गई, तब देन वो है। एंड कि जी वहां द परपेट्रेटर्स हैव बीन ट्रैक डाउन, अब जरूरत नहीं है। वी सर हैव आपको कट शॉर्ट करते हुए, लॉजिकल कंक्लूजन। सर आपको कट शॉर्ट Thank you. करता हूँ, अगर आपकी तरफ से अगर कोई सजेशंस हो, मतलब सजेशंस तो नहीं कह सकते हम, कहें अगर आपके अकॉर्डिंगली व्हाट आर दी स्टेप्स फॉरवर्ड which can be beneficial, and you never know. Step forwards, तो देखिए चंद्र साहब, there is a whole list of projects which are sanctioned under the agreement, उनको जल्दी से जल्द से जल्द करें। और the other ones which are envisaged, which were not being executed just for want of permissions for Pakistan or no objection certificate from Pakistan। और जिस तरह मिस्टर राहुल भंडारी टॉक्ड इन टर्म्स ऑफ द सेकंड रावी ब्यास लिंक, वो तो हिंदुस्तान का अंदरून मसला है, लेकिन उसमें पंजाब ने बड़ी ऑब्जेक्शन दी है कि आप वो पानी लेके करोगे क्या, आप शाहपुर कंडी डैम को ऑपरेशनलाइज कराओ, क्योंकि वो पानी लेके जाओगे तो यू विल अक्वायर लैंड इन पंजाब, तो वो अल्टीमेटली कौन से हिस्से को आप इरिगेट करोगे। एंड सिमिलरली इंटरस्टेट इश्यूज हैं, पानी जा रहा है राजस्थान को, वाटर लॉगिंग हो रही है सदर्न पंजाब में। सो वी आर नॉट गेटिंग इनटू द वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इमोटिव इश्यूज। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट देयर इज अ सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स व्हिच आर अप्रूव्ड, उनको एग्जीक्यूट कीजिए, विच आर अंडर एग्जीक्यूशन, एंड अ न्यू सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स। जिस तरह वो बता रहे हैं कि वो टनल आप बनाएं, और टनल को बना के जो चनाब का पानी नहीं अगर सांबा और उस कठुआ डिस्ट्रिक्ट में इस्तेमाल हो सकता है, उसे डालें रावी बेसन में। एंड द रिवर्स आर इंटरलिंक्ड। ब्यास का लिंक भाखड़ा डैम में सतलुज से है, और सिमिलरली रावी का ऑलरेडी लिंक जो है माधोपुर हेडवर्क से, इट इज द वाटर इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द ब्यास बेसिन through Chakki Khad and so on. Well, those are technical issues which we are not getting into. So projects have been identified, feasibility studies have been done. These are not something in thin air. हाँ, इतनी सिंपल सोल्यूशन नहीं है जैसे वो कहते हैं कि कौन सी टूटी है जी जो हिंदुस्तान बंद कर देगा। बट प्रोजेक्ट्स आर देयर एंड वी हैव टू स्टार्ट डूइंग द प्रोजेक्ट इन द राइट अर्नेस्ट, इन अ मिशन मोड, फुली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये नहीं कि 5% तो पंजाब दे ही, है जी, 2% तो हिमाचल दे, 98% पैसा आया हुआ है, 2 नहीं आया हुआ, तो वो अब किए हुए हैं। एंड हरियाणा इज मूविंग एन इंटरम एप्लीकेशन कि जी ये हम राइपेरियन स्टेट हैं। अब उसमें भी सिंस वी आर स्टिल विद इन द टाइम लिमिट, ये भी आई वुड नॉट से डुप्लीकेसी बट डुअल स्टैंडर्ड इसका आप देखिए। हरियाणा क्यों मांग रहा है पानी ब्यास का? वो कहते हैं जी 1966 से पहले यूनाइटेड पंजाब में हम ब्यास के साथ लगते थे, रावी के साथ लगते थे, बंटवारा हो गया इसलिए हमें पानी दीजिए। वेरी गुड, मान ली बात। तो क्या पंजाब यमुनानगर में यमुना के साथ नहीं लगता था? वर वी एज एन यूनाइटेड पंजाब नॉट अ राइपेरियन टू यमुना? और जब यमुना वाटर्स का
सेंट्रल गवर्नमेंट ने मीडिएशन करवा के एग्रीमेंट करवाया, 5-6 स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश शामिल है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, तो पंजाब को ऑब्जर्वर तक स्टेटस नहीं दिया। एंड जब हम एज अ जूनियर लेवल ऑफिसर और मिडिल लेवल ऑफिसर कहते कि जी ये साहब आप एप्लीकेशन मूव कीजिए कि अगर राइपेरियन स्टेट वो हरियाणा आज वहां रावी में मांग रहा है जो आसपास भी नहीं है, तो बाय द सेम टोकन हमको दीजिए। नहीं जी, फिर तो देन वी विल बी कंसीडिंग द पॉइंट। भाई कैसे? इफ वी आर नॉट बीइंग डिनाइड इन पार्टिसिपेशन इन यमुना वाटर्स, हाउ कैन इन द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर? देखिए पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर विच वाज एग्जिस्टिंग ऑन 1 नवंबर 1966, उसमें सबका हिस्सा है, वो होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी ये कहता है। लेकिन जो एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है जिसके लिए यू आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ डाइम, तो वो अगर आप इस तरह की लिटिगेशन फ्रिवलस, आई वुड से, हरियाणा में से इट इज वेरी सीरियस, तो वो उस तरह की बातें यूनियन गवर्नमेंट हैज देन टू स्टेप इन आइदर पॉलिटिकली थ्रू एग्जेक्टिव ऑर्डर और ब्रिंगिंग एन ऑल इंडिया एनेक्टमेंट टू से कि इसमें ये सारा एक स्कीम है, नोटिफाई हुई है, इट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू इंटरस्टेट लिटिगेशन। ये करना पड़ेगा। एंड छोटे छोटे प्रोजेक्ट के मिशन डायरेक्टर्स ड्यूली एम्पावर्ड विद अ स्ट्रॉन्ग कैबिनेट मिनिस्टर एंड फंडिंग, तब जाके ये होगा, वरना इट मे जस्ट बी एज आई सेड, अ फुटनोट इन हिस्ट्री। साल बाद, 6 महीने बाद कि जी किया तो बड़ा अच्छा था लेकिन हुआ कुछ नहीं। We don't want that to happen. And Punjab has stake emotionally, economically, agriculturally, agronomically, ecologically in every sense. Ji, sir. We are quite sacrosanct, but whenever Mr. Rahul Bhandari, who has done his thesis, etc., as we were discussing prior to the session, उनसे suggestions लेते हैं कि मतलब not suggestions, फिर वही what inputs he gave, and we are quite sacrosanct that it will actually snowball into the right perspectives. उनके accordingly क्या-क्या ये treaties का effects हैं and how we can actually gain from that. Over to Mr. Bhandari. सिद्धू सर ने बड़े अच्छे से everything he has said, but just 2-3 figures I want to give, very very brief. First is, remember Pakistan's 80% agriculture is dependent on Indus River. Their GDP of 350 billion or so, 50 billion comes from agriculture, and around 45% population is on agriculture. So minor tweaking can also really affect them in a big way. But my point is that we have to now, as we see the political leadership seems to be working with lot of focus now, and I'm sure they are confident कि जी अब हमने करना ही है। अब स्टेट्स के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, JNK के अपने अपने छोटे मोटे इश्यूज को सेट असाइड करके वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। वी कैन नॉट से कि ये पानी पंजाब का या राजस्थान का है। अगर पाकिस्तान से करना है, तो अगर आपस में उलझ के रह जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में 10 साल केस चलता रहा या 2 साल JNK की एप्लीकेशन आ गई या हरियाणा की आ गई, फिर तो कहीं मूव नहीं होगा। बट going by the stance which the government has taken in the last couple of days, it seems that they are very very serious, and they want to move ahead and see that कि वही पानी से वही पानी जो जा रहा है पाकिस्तान, उसी से, उस प्रॉस्पेरिटी से ही वो वेपन्स इंडिया को खरीद के वापस इंडिया को भेजे जाए और इंडिया में इस तरह के इश्यूज क्रिएट हो। The one last thing before I leave it to the other important people, we must keep it in mind the similar interstate rivalries in Pakistan also. There are very very strong rivalries between Punjab and Sindh, and even in Punjab, Pakistan, between Upper Punjab and Lower Punjab. Sindh people are always accusing Punjabi Pakistanis of stealing their water and not giving enough. So that is also one of the things. As a geostrategist, one should keep it in mind. And out of 4 provinces of Pakistan, Sindh is troubled because of water. Baluchistan is, as such, we know, very very unstable. And it's only the Pakistani Punjab and that too few districts of Punjab who are running the show in Pakistan for the last 65-70 years. So India has to see and use those fractures using water also to see to it
Last thing, sorry, I'm changing my. There's a lot of debate in Pakistan. I was watching the media channels also. They feel that India is trying to pit J&K, Indian Kashmiris against Pakistani people. Because in case the treaty is abrogated or annulled or kept in abeyance, and the water uses to J&K increases, the people of Punjab or Pakistan are going to be affected, and there's a demand by Indian Kashmiris that we don't have water. We need more water. So they feel that Indian government is pitting the Kashmiris across the LOC. So that's another psyche which is going on. I think that is more than enough from my side. I can only say that both of you have given a good brownie points, and a lot of people would have a good food for thought. And thank you to both of you, and thank you to the participants who have watched this session. And I would be too glad to share that it has done well on the YouTube also. And I have shared the links to Mr. Bhandari as well as Mr. Sidhu. Everyone stay safe, stay blessed. Thank you. Thank you very much. Thank you.